हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का जेई एडवांस का पेपर खत्म हो चुका है। आज हम लोग पेपर वन का सॉल्यूशन और एनालिसिस करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारा पेपर था उसमें क्या क्या बातें हैं इम्पोर्टेंट, जो क्लास 11th में अभी हैं, जो क्लास 12th में अभी हैं, उनको ध्यान रखनी चाहिए फॉर देयर एग्जाम इन द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। एक तो सबसे पहला एनालिसिस ये है कि अगर हम पेपर वन केमिस्ट्री का चेक करें तो उसमें लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करा गया है। अगर मैं बात करूं सो देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, which are considered to be the most important chapters of the physical chemistry, followed by the problems from the surface chemistry, metallurgy, P block, amines, chemical kinetics। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें से हम ये कहें कि आईआईटी ने उसे कवर ना किया हो। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, समटाइम्स स्टूडेंट्स इग्नोर द रिएक्शंस ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको मोल कंसेप्ट ढंग से आता भी है, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, you won't be able to solve many problems in the paper. Is that thing clear? So you must know the reactions which are taking place. Only then you can apply the mole concept and accordingly the answers can be obtained. There were questions from the coordination chemistry, the metallurgy, hydrocarbons, organic chemistry। पेपर वन में ही एक बहुत ही लार्ज स्पेक्ट्रम में हर टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। आई अकॉर्डिंग टू मी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के मुकाबले जो केमिस्ट्री का पेपर था वो रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि थोड़ा टफ था। ठीक है। इट्स नॉट दैट कि अगर हम फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में देखें तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर रिलेटिवली इजियर था, बट एक एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो पेपर ऑफ केमिस्ट्री वाज नॉट दैट इजी। फाइन। सो कंपेयरिंग टू पेपर टू, जब हम पेपर टू का एनालिसिस करेंगे तो हम पेपर वन पेपर टू का कंपैरिजन भी करेंगे और एक ओवरऑल एनालिसिस भी करेंगे। आज जो है हम लोग फोकस पेपर वन पे कर रहे हैं। ठीक है। पेपर वन में जो क्वेश्चंस हैं हम उनको पूरा सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी आर नाउ गोइंग टू लुक एट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करें कि जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था दैट वाज फ्रॉम द थर्मोकेमिस्ट्री वी आर हैविंग ओवर हियर। यहाँ पे कहा गया है 2 moles ऑफ हीलियम इज कंबस्टेड इन अ फिक्स वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर। हमें ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो डेल्टा यू होता है विच इज द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज मेजर्ड बाय डेल्टा यू, और डेल्टा एच क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। whenever for any reaction we have to relate these two factor, delta H is equal to किसके बराबर होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng आर टी। दिस इज द इक्वेशन जिसको हम कह सकते हैं कि हम लोग यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड रिलेटिंग द एंथैल्पी चेंजेस इन दिस केस। In this particular case, you have been given the bomb calorimeter. Mercury is taken. Hg gas is taken. It is undergoing the combustion. And on combustion, what it is forming? It is forming the product as HgO. This is obtained in which physical state? It is obtained in the solid physical state. If I balance it, it will be like this over here. You have also been given the molar heat capacity of the calorimeter. It is 20 kilojoules, that is per Kelvin over here. And therefore, the amount of heat released by the calorimeter, वो किसके बराबर होती है? Heat release will be equal to, that is minus 20 delta H की value multiplied by कितना होगा? That is given to you as equal to, in this case 14.8. So what we are getting over here, this is the value that we are getting about the amount of heat release, that is minus 296 kilojoules over here.
ध्यान रहे यहाँ पे जो 14.8 है that is the temperature difference because the temperature was increased from 298 Kelvin to 312.8 Kelvin. Fine. After this, in this particular case, I can say कि जो डेल्टा यू है कंबर्शन का वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी -296 by 2 that is equal to -148. This is kilojoules per mole. Thereafter एंथैल्पी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन के लिए? अगर हम कैलकुलेट करें तो ये सॉलिड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है. So what we are going to say in this case that the value of delta Ng, ये गैस फेज है सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 0 minus 1 plus half that is equal to -3/2. तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को यूज करके एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन निकाल सकते हैं which is coming out to be equal to -151.710. Is that thing clear? After this, what is happening in this case? The enthalpy of combustion of Hg liquid has to be analyzed in this particular case. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे को पता है कि Hg liquid plus half of O2 gas HgO solid. अगर हम इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन देखते हैं जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज -151.710 by making use of the equation delta H is equal to delta U plus delta NGRT. तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO minus enthalpy of formation of mercury liquid and for O2 you know the enthalpy of formation is 0. तो ये किसके बराबर होगा? It will be equal to enthalpy of formation of HgO -61.32. So this will give you the answer as 90.39. So I'll say it's a tough question. It was involving so many things in the problem and accordingly we have to proceed in this case. This is question number 2 of electrochemistry. In this particular case, you have been given the reduction potentials of 3 reactions over here. और इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा था. सबसे पहले अगर हम इस कन्वर्जन को देखें तो MnO4 minus is getting converted to MnO2. If I balance this reaction in the acidic medium, I will add 2H2O. It is 4H plus ion plus 3 electrons. Fine. After this, MnO2 is said to be converting to Mn2 plus. For balancing, we will say it is 2H2O. It is 4H plus ion and it will be how many electrons? It will be 2 electrons in this case. One more reaction that is given is about the Mn2 plus getting converting to manganese. If I do so and balance it, it will be 2 electron over here. Now, after adding all these 3 reactions over here, what we are obtaining the final reaction as MnO4 minus 8H plus ions, 5 electrons forming Mn2 plus 4H2O because we know that this conversion takes place in the acidic medium. Further, in this case we should know कि जब भी हम reactions को add करते हैं तो उनके delta G0 की values add होती हैं. Delta G0 is equal to delta G1 naught plus delta G2 naught plus delta G3 naught. और delta G0 किसके बराबर होता है? माइनस NFE. पहली रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 होगा माइनस इट विल बी इक्वल टू -3F इंटू 1.68. इसके लिए क्या होगा? n की वैल्यू 2 है तो इट इज -2F इंटू 1.21. और थर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? -2 इंटू F इंटू -1.03. Since delta G0 is an extensive property and we obtain delta G0 by adding the delta G0 of the different reactions over here, so I'll be obtaining it is -7F E0 is of the reaction that is needed
minus 3 into F into 1.68 minus 2 into F into 1.21 plus 2F into 1.03. On simplifying this, we are getting the value of E naught is equal to 0.77 volt. This is our final answer to this particular question based on electrochemistry over here. In question number third, the question based on ionic equilibrium concept, we are observing this thing that we are having four compounds, H2CO3, sodium bicarbonate, sodium carbonate and sodium hydroxide. In 100 ml of water, the pKa1 and pKa2 of carbonic acid are given. If I consider H2CO3 in this case and NaOH, they are going to react over here. Acid-base reaction. What do they form? NaHCO3 plus H2O. You have been given कि इसका 0.01 था, इसका 0.01 था, इसका 0.01 था. जब रिएक्शन होगी तो ये दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे और ये 0.02 हो जाएगा. Buffer solution is formed containing sodium carbonate and NaHCO3 because the buffer solution is actually the mixture containing the weak acid and the salt of its conjugate base. Applying the Henderson equation, pH is equal to pKa2 होगा यहाँ पे 10.32 plus log. आगे क्या आएगा? It is carbonate ion concentration divided by the bicarbonate ion, salt upon acid. It is 10.32 plus क्या हो जाएगा? Log 0.01 upon 0.02, and the correct answer to this will be 10.02. This is the value for the pH of the acidic buffer because buffer is actually the mixture containing weak acid and the salt of its conjugate base. Question number 4 is a very important question as it was combining two chapters. It is mole concept and it is also combining the reactions of the D block elements. Copper nitrate, the first thing is the reaction part. If the reaction part is clear, then you can attempt the problem on your own also. Copper nitrate with Ki is forming the product as cuprous iodide. ज्यादातर बुक्स में Cu2I2 करके लिखा रहता है, पर हम Cui करके भी लिख सकते हैं. Is it clear? So it is also forming the product as, in this case, potassium nitrate. Is that thing clear? This is the balanced equation which we are having in this case. After this, iodine जो form होता है अगर ये Ki के साथ react करेगा, so it results, it's a Lewis acid base reaction and I2 is forming the coordinate bond with I minus, and thereafter if I add both the reactions in this case, it will be 2 times copper nitrate plus Ki. It is forming the product as, in this case, it is forming Ki plus क्या होगा 2Hi plus sulfur. इसके precipitates बन रहे हैं. आपको कॉपर नाइट्रेट का मास दिया था 3.74, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3.74 डिवाइडेड बाय 187. दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ मोल एज 0.02 और KNO3 का जो यहाँ पे मास अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट प्लस Ki है और हमने एक यहाँ पे गलती कर दी है, Ki3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, कॉपर आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा. चेक दिस वन, द करेक्ट इक्वेशन Ki3 plus 2Cui और 4K. I've just added both the reactions. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. 0.02 मोल इसके थे जो पोटेशियम नाइट्रेट के, यहाँ पर अगर हम उसको रिलेट करेंगे तो इन दिस केस द, यहाँ पे कहा गया है कि एक्सेस Ki के साथ ब्राउन सॉल्यूशन बनता है
और इन दिस केस वी विल बी फॉर्मिंग रिलेटिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद हम एक और रिएक्शन जो मैंने गलती से पहले लिख दी थी, Ki3 में H2S जब पास कर रहे हैं, इट इज फॉर्मिंग सल्फर प्लस Hi प्लस Ki, ठीक है ना। तो इसके 0.01 मोल का फॉर्मेशन होगा सल्फर के, और अगर इसके 0.01 मोल का फॉर्मेशन होगा तो हम उसको मास ऑफ सल्फर से रिलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 0.32 grams in this case, ठीक है। Question number 5 is again based on the reaction of P block, where a lab preparation that takes place of white phosphorus with NaOH. This is a very common reaction, a reaction called as disproportionation reaction, forming sodium hypophosphite and pH3 is the reaction that we are having, ठीक है। After this आपसे कहा गया कि फॉस्फोरस के 1.24 ग्राम है, 124 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.01 मोल्स ओवर हियर। तो अगर ये 0.01 मोल है तो हम क्या कह सकते हैं कि pH3 के भी कितने मोल्स मिलेंगे, 0.01। उस pH3 को कॉपर सल्फेट्स के साथ एब्जॉर्ब कराया गया, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म, Cu3P2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। So this is the balanced equation, and we can say कि यहाँ पर इसके 0.01 मोल्स हैं, और अगर Cu3P2 के मोल्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी, आपसे पूछा गया अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, इन दोनों को रिलेट करें तो कॉपर सल्फेट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 3/2 ऑफ 0.01, और अगर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट निकालना होगा तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर देंगे 159, that is 2.385 grams. Is it fine? So this is the fifth question that we discussed over here. Is it fine? Clear to you? After this we move further to the next problem over here, that is the sixth question, that is एक अल्कोहल था और Br है, जब रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये क्या होगा, CH2Br, and it will be Br. We are doing the estimation by the Carius method. Carius method is used for the halogen estimation. You know this thing. और जिसमें कि Br को किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जाता है, AgBr की फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जाता है। आपसे बोला गया कि ये जो कंपाउंड R है इसका 1 ग्राम को एस्टिमेट करेंगे और आपको बताना है कि कितने अमाउंट HB AgBr का फॉर्म होगा, ठीक है। सो अगर हम इस जो प्रोडक्ट बना है इसका मोलर मास निकाल लें तो इसका फॉर्मूला क्या है, C7H6Br2। इसका मोलर मास की वैल्यू निकालते हैं तो इट कम्स, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, इट इज कमिंग आउट टू बी 250 ग्राम्स पर मोल। तो मोल्स, क्योंकि दो Br ग्रुप हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इट शुड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ AgBr। तो मोल्स इसके कितने थे, 1 अपॉन that is the molar mass that is given was 250 in this case, so this will be equal to 1, इसके 250 आया था ना, तो इसके 1 अपॉन 250 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन 250 into 2 is the moles of AgBr form multiplied by 188, it is equal to 1.504 gram. That is form for sixth question. For seventh question, this is a very common reaction that we discussed, that is called as the Dawes process over here. So in the Dawes process, when nucleophilic aromatic substitution takes place, the first product that is formed over here is, it is sodium phenoxide over here, which ultimately form the phenol. And when it was acidified with sulfuric acid followed by nitric acid over here, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, बेसिकली उसको एसिडिफाई कर देगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, OH बनाएगा, और फर्दर नाइट्रेशन करने पर ये क्या बनाएगा, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H3O7N3 इज द केस। इसका मोलर मास कितना आएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 229,
ग्राम्स पर मोल। और अगर हमें बताना हो कि परसेंटेज कितना होगा, सो दैट विल बी 3/229 और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज 3 हाइड्रोजन है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 1.31% will be the answer to this question. Fine. After this, there is another question that we are discussing, question number 8. This is again more concept को क्वेश्चंस के साथ बहुत ज्यादा रिलेट किया गया है. This is a very very important point in the paper of JEE Advanced paper 1. We are having acetylene. Acetylene का जो मास दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं सॉरी, वो 15 मोल्स हैं. और हमें पता होना चाहिए कि जब एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट एज बेंजीन. इसके 15 मोल्स अगर मैं लूंगा तो आई एक्सपेक्ट कि बेंजीन के 5 मोल्स बने, 1/3 मोल्स बनने चाहिए. ठीक है ना. You have been given the yield is 80%, so I should say that it should form how many moles over here? It will actually is forming 4 moles of A over here. After this, this benzene is undergoing the Friedel-Crafts alkylation, forming the product as cumene isopropyl benzene. In this case, formation is taking place. We know that 1 mole of benzene give 1 mole of this. So 1 mole of isopropyl benzene B compound formation does take place. But since the yield is 50%, so not the 4 moles are formed, it is forming 2 moles of this compound. Followed by the reaction air oxidation and acidification in this case, and is forming the product as phenol over here. Okay. The yield is again 50%, so 2 mole will be giving 1 mole of phenol over here. और phenol further acetyl chloride के साथ जब react करता है तो it will form the acetylated product, in this case OCOCH3, that is C8H8O2. और इसका टोटल मास किसके बराबर, इसका मोलर मास 136 आएगा बच्चे, मैंने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी. So the mass of the product D that is formed is कितना हो जाएगा, मोल्स कितने बने थे 1, so it will be 1 into 136, that will be equal to 136 gram of this is formed over here. After this we move further. Question number 9, it's a fact based question. It's based on the molecular orbital theory. Molecular orbital theory में हम लोग ये बात बोलते हैं कि z axis is the internuclear axis we are having, और it leads to the formation of sigma 2pz orbital, और जो 2px 2py orbitals होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, pi 2px and pi 2py orbitals over here. ठीक है ना. तो इट इज सेइंग कि अगर 2pz ऑर्बिटल को ही वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाता है तो सिग्मा ऑर्बिटल, अगर pz ऑर्बिटल की बात करें तो pz ऑर्बिटल की जो शेप आती है वो कुछ इस तरीके से आती है. ठीक है. तो इन दिस केस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नोड ओवर हियर, दैट इज द रीजन व्हाई द ए स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. ठीक है. So there is the formation of two nodal planes in the sigma orbital over here. और जब pi orbital का formation होता है तो pi orbital का जब pi molecular orbital का formation होता है तो we observe that it also leads to the formation of the molecular orbital. एक pi 2p बनेगी, और अगर pi star 2p की बात करूं तो pi star 2p इस तरीके से फॉर्म होती है like this, जिसमें कि xy plane में क्या होगा, this is the xy plane, there will be the molecular axis where the nodal plane is present. Therefore इसका सही आंसर A और D होगा. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. लिखा है chemisorption results in the unimolecular layer. Yes, chemical adsorption is a phenomena in which we observe that chemisorption में क्या होता है, unimolecular layer का formation होता है. Physical adsorption, because it is involving the van der Waals forces, so it can involve the multi-layer formation taking place over here.
बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द unimolecular layer. That is the main difference also between the physical adsorption and the chemical adsorption over here. Here also it is saying that in this particular case, it is saying enthalpy change during physiosorption is in the range of 100 to 140 kilojoules per mole. Physical adsorption जो है वो क्या है? It is a kind of the simple van der Waals forces that are present, और ये magnitude जो है 20 से 40 kilojoules per mole के करीब रहता है, जो और ये काफी ज्यादा है. This is not true statement over here. Chemisorption के लिए कहा गया endothermic process is a wrong statement. For adsorption, delta G negative है, delta H भी negative है. In this case, the temperature is the deciding factor. Delta S is also negative in this case. After this, it is saying that ये statement गलत हो गई, B भी गलत है, C भी गलत है, और D part में लिखा है कि lowering the temperature favor physisorption. It is correct. Adsorption is an exothermic process, and as per the Lee checklist principle, we say that it is the low temperature that favors the physical adsorption process in this case. So the correct answer to this particular question will be, what are the correct answers? It is A and D are the correct answers. क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11th में एल्यूमिनियम मेटलर्जी का ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अब, ठीक है ना. मेटलर्जी में अब आपसे ये कहा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और बात करी गई है, ठीक है ना. सो इट इज इन्वॉल्विंग द लीचिंग प्रोसेस वेयर देयर इज अ डिसॉल्विंग ऑफ बॉक्साइट ओर टू फॉर्म सोडियम मेटाइल्यूमिनेट either by Bayer's process or by the Hall's process. सोडियम मेटाइल्यूमिनेट से CO2 को पास करते हैं H2O, so it does form AlOH whole thrice, जिसका कैल्सिनेशन किया जाता है to obtain the pure alumina in this case. 2 AlOH whole thrice will be undergoing and forming Al2O3 plus H2O in this case. और Al2O3 plus NaOH क्या फॉर्म करेगा? It will be forming NaAlO2 प्लस H2O. हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एल्यूमिना का, तो हम क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार दो सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर सके, ताकि वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी इंप्रूव कर दे. So considering all these parameters, I can say that the B, C and D are the correct answer for question number 11th in this case. Question number 12 is involving, it's a very simple question. It is showing, asking the reaction of PBS with HNO3 and it forms the product as lead nitrate. ठीक है, लगभग वही रिएक्शन होती है जो एक्वारिजिया के साथ होती है, और ये NO फॉर्म करता है प्लस H2O एंड इट लीड्स टू, बैलेंसिंग करें तो ये 8HNO3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 2NO and 4H2O will be the balanced reaction over here. So you know that NO gas is a paramagnetic gas, neutral oxide, and it is a colorless gas. Therefore, the correct answers are A. Nitrogen dioxide NO2 reddish brown होती है, NO तो colorless gas होती है. Question number 13 is based on the carboxylic acids reactions where we are having a carboxylic acid, bromine और red phosphorus की presence में क्या हो रहा है? It is undergoing the alpha halogenation reaction, HVZ reaction is taking place. Product P is formed, which is undergoing the nucleophilic substitution reaction in a type of reaction called as Gabriel Thalamide synthesis, a reaction which we discuss in case of amines. तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म हुआ करता है जिसमें ये नेगेटिव, ये जो पार्ट है N नेगेटिव, ये इधर अटैक करता है. It will be forming the product as phthalic acid over here, as it is as given over here, and it is also forming the another product. बस Br की जगह पे NH2 आ जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा, इसको एलेनाइन भी बोलते हैं in this case. ठीक है ना.
और दूसरी बात ये कि यहाँ पर P भी आ गया हमारे पास, Q भी आ गया, ठीक है ना। After this, it is asking about the acidic strength of propanoic acid and 2-bromopropanoic acid. Definitely, जब Br ग्रुप आएगा तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और अगर वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the acidic strength of carboxylic acid in this case. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन ओवर हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, in this case what is happening over here is that CH3NO2 is there। आपसे पूछ रहा है कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, डायजोनियम की रिएक्शंस हैं, SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, और इसका अगर हम आंसर देखें तो वो आंसर क्या होता है, इट इज बी सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर विच आई हैव अराइव्ड टू। सो यू कैन चेक द रिएक्शंस। NO2 का आपको पता है रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। NO2 ग्रुप को कौन यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिड्यूस करता है, SnHCl रिड्यूस कर सकता है, H2PD भी कर सकता है रिड्यूस, ठीक है ना। और ये NO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, NH2 आ जाएगा और CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे NaNO2HCl के साथ, लाइक दिस, followed by the reaction with H3PO2, followed by the alkaline KMnO4 oxidation will form COOH, because whenever any aliphatic chain that is attached to the benzene ring is bonded to the benzene ring, it get oxidized to carboxylic acid. Fine. For the next question, that is the 15th question, that is of chemical kinetics question that is there. There are different ways of writing the rate laws of a reaction, and we have to match it with the graphs that are given on the right hand side in this case. Fine. So what we are saying in this case is कि जो रेट है वो किसके साथ रिएक्ट, रेट क्या है फर्स्ट रिएक्शन का, kx, कह रहे अंडर ऑल पॉसिबल कंसेंट्रेशन ऑफ x। देखो अगर रेट की वैल्यू, रेट का एक्सप्रेशन kx अपॉन xs प्लस x करके दिया हुआ है, और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पर x जो है इट इज लेस देन xs, तो रिएक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल फॉलो। अगर ये वैल्यू xs प्लस x इफ इट बिकम xs के बराबर, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो हम क्या, अगर ये लो कंसेंट्रेशन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेट, अगर x हाई कंसेंट्रेशन हो गया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा kx अपॉन x, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। तो इसीलिए जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, उसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द p पार्ट ओवर हियर। This is the equation representing the first order kinetics over there. After this, second part में बोला गया है कि if अगर x is less हो गया तो रिएक्शन फिर से क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q and T हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी S फॉर दिस, और फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू अगर XS से काफी ज्यादा होगी तो भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा। So the question was simple, just we have to analyze whether the reaction, which order reaction it is following over here. Fine. After this, there is another question, that is the last section, which is match the column question over here. It is involving certain reactions. हम अगर इन reactions को सबको लिख लें तो आप लेफ्ट साइड वाले से सबको मैच कर लोगे। BaO2 plus sulfuric acid will form Ba sulfate plus H2O2. BaO2 plus HCl will again be forming H2O2. Calcium hydroxide and MgCl2 will form MgOH whole twice calcium chloride. Calcium bicarbonate and calcium carbonate will form calcium carbonate plus H2O, और फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है
it is MgOH whole twice plus CaCO3 plus H2O. ठीक है ना? Hence what we can say in this case, the correct answer for this first का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट के एक्चुअल में दो आंसर आ गए. फर्स्ट का आंसर QS हो गया, सेकंड का क्या हो गया? PR. ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो गया? इट इज S. और फोर्थ का आंसर क्या हो गया? PT. ठीक है, accordingly you have to match the answer, and according to me D should be the correct answer for this. After this, क्वेश्चन नंबर 17 इज देयर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. CrCN6 क्रोमियम यहाँ कौन सी स्टेट में है? इट इज प्रेजेंट इन +2 स्टेट. और अगर ये +2 स्टेट में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, और इफ इट इज लाइक दिस, so what should we say in this case? 4s0, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है ना? और क्रोमियम अगर +2 में हो गया, so this is the configuration that we will be having, D4. So Cr2 plus will be 4s0 3d4 configuration over here in this case. ठीक है ना? After this what we are saying कि ये D4 स्पीशी है, क्योंकि पेयरिंग होगी तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हो गया, और T2G ऑर्बिटल में ही ये चारों इलेक्ट्रॉन है, तो इसके करेक्ट आंसर्स हो गए P, R एंड T. रूथीनियम का एटॉमिक नंबर हमें गिवन था 44, और अगर Ru+4 का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इट इज अगेन 4s0 3d4. इट इज अगेन अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन दिस केस, और इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? इसके आंसर में अगर रूथीनियम की स्टेट निकालें तो इट इज +4, तो इसका एक और आंसर ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा PrSNT. After this, CrH2O6 2 plus, again chromium in D4 configuration it is having, and we will be saying that H2O क्योंकि एक weak field ligand है, तो यहाँ पर क्या configuration आने वाला है? There will be this configuration that will be there for D4 for the third part over here. इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड इफ देयर विल बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 into 6 that is √24 will be the Bohr magneton in this case, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? Q and T हो जाता है. For the last one, FeS2 is a very common example. It's a high spin complex. Water is a weak field ligand. इसके करेक्ट आंसर भी क्या हो गए? PT हो गया. तो यहाँ पर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यू कैन कंक्लूड that A option is the correct answer over here. Coming back to the last question over here in this case, it is based on qualitative analysis over here. For aniline, it contains the nitrogen atom, carbon atom, so it will definitely be giving Prussian blue color with sodium extract. So definitely first part will give accordingly like this only. और दूसरा पार्ट क्या होगा? If in aniline जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, so it form the white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमो aniline in this case. ठीक है, सिमिलरली अगर ऑर्थोक्रेसोल की बात करते हैं जिसमें OH और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इट विल बी गिविंग द वायलेट कलरेशन. दैट मींस T शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट पार्ट का आंसर होता है P एंड S, और सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है T. ठीक है, आफ्टर दिस थर्ड पार्ट को अगर हम चेक करें तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज CH, it is COOH, CH2SH and NH2. Because of this carboxylic acid group, it will be forming, it will be releasing CO2 from NaHCO3 solution over here. And therefore, third part का आंसर क्या हो जाएगा? It will be Q and R because it contains carbon, nitrogen, sulfur, so it will also be giving blood red coloration देता है ये सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? That is Fe. थर्ड पार्ट का आंसर होना चाहिए Q and R.
And for the last one, caprolactam, which is used in the manufacturing of nylon 6 polymer over here. So it will also be containing carbon and nitrogen and will be giving the Prussian blue color with the sodium extract. And therefore, the correct answer to this will be the P part over here. Okay. So if we check all these answers, the D option is observed to be the correct answer in this case over here. So this is our discussion of the paper 1 और पेपर 2 को हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। आप लोग पेपर 1 का रिव्यू फीडबैक जरूर दें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सॉल्यूशन को शेयर करेंगे, so it will be benefiting more and more number of students. All the best for your results. Thank you.